In this episode, Master Chef Ajay Chopra is taking us into his kitchen. Learn how to make a Rumali Roti and turn it into a multi-layer ajwaini paroti. Take a tiffin aloo jeera and turn it into a stuffed smokey kebab in the magic tiffin segment. We are going to learn how to give a smoky flavor to our dishes with the Dungar technique. This and many more restaurant-style cooking tips coming up on how to cook like a super chef. Hello and welcome. We are with Chef Ajay Chopra, your favorite, my favorite, and I think everybody's favorite. He's India's favorite chef. In Dungar's menu, we are doing an ajwaini paroti today. So what's special about this bread? Is there something out of the box in this bread? So this inspiration comes from a nani. Wow. Because she's from Pakistan and she used to make this ajwaini paroti, and paratha has got many names in India. When you go to Punjab, it becomes paranthi. When you go to Delhi, it becomes paranthi. But when you go to Allahabad, it becomes paratha. When you go south, it becomes parota. So paratha changes its names and forms everywhere. Now this typical paratha or paranthi, my nani used to call it paranthi, was a very home thing. So a crisp paranthi with ajwain inside it used to be a general lovely breakfast with white butter. So I thought that how can I recreate that into a experience in the restaurant. Obviously, that is a very breakfast kind of a paratha. You don't want to eat generally with the main course. So we tried that in the tandoor. It actually came out really well. My mom was really impressed because when I told her that this is, we used to call our nani chai. That's a very Pakistani word. Right. So I told this is chai's inspiration, and she had tears in her eyes. So. कि अजवाइनी परोठी ना हम बनाते कैसे जी। पहले तो हम मैदा लेंगे। ये मैदे को हमने गूंदा है, जैसे ये मैदा है, 1 किलो मैदा हो, उसमें 300 से 400 मिलीलीटर दूध होना चाहिए और साथ में आपको शुगर होना चाहिए, थोड़ी सी टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक होना चाहिए और उसके बाद में आप गूंद लें। उसमें आप पानी कम से कम डालें, बिल्कुल ना के बराबर। अब दूध जो है, दूध से ये जो इसकी इलास्टिसिटी है वो फैलती है, फैलेगा नहीं तो इसमें मल्टी लेयर की ब्रेड नहीं बना पाएंगे। ये इस तरह से गोल हो गया। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, आधे घंटे के लिए मिनिमम आप रख दें। तो शेफ, ये जो आधे घंटे आप रेस्ट करते हैं, इसका कोई रीजन है क्यों रेस्ट करते हैं? बिल्कुल। अब जैसे ये आपने 11 डो लिया है, आपने आधे घंटे पहले आपने किया है, ये अभी हमने आपको बताया था ये किया। ये दोनों में बहुत फर्क है, ये कितना सॉफ्ट है, कितना हार्ड है। हार्ड है यानी कि अभी जो इलास्टिसिटी जो है ये नहीं फैलेगी, ये वापस फिर से अपनी तो ये स्ट्रेच नहीं होगा जितना होना चाहिए। जी। तो उसका ये रुमाली रोटी की एक और टेक्निक है, जो इसके एजेस होते हैं, ये साइड के जो आपने देखा है, ये किनारे के बिल्कुल पतले होने चाहिए एक जैसे और बीच में थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, जिससे अब आप इसको ऐसे ऐसे करके इसको आप बढ़ाएंगे। शेफ, इसमें अक्सर क्या होता है, मैंने ट्राई किया है तो ये फटने लगती है। जी। अब आपने देखा, ये हाथ देखे आपने जी, ये हथेली पे आप लीजिए, ऐसे होने चाहिए। इसको जो है हमेशा ऐसे होने चाहिए। वाह। अब आप देखिए ये रोटी थोड़ी थोड़ी बड़ी होगी। अट्रैक्शन ये होता है कि लोग बहुत अच्छी रुमाली घुमाते हैं। आपने देखा ये जो रुमाली जो घुमाते हैं ये बहुत अच्छी है। शेफ, मैं ट्राई कर सकती हूँ? आप भी ट्राई करें। कैसे घुमाया जाता है? इसको ऐसे और ऐसे कभी सॉरी आपने तो बिल्कुल मुझे ही घुमा दिया, मतलब घुमा देंगे तो मैं ऐसे आप घुमाए बड़े प्यार से। इसको क्या घर पे आप डस्टर वगैरह से ऐसे घुमाए तो आती रहेगी, मतलब रुमाल घुमाने की प्रैक्टिस करते हैं तो अब आपने जैसे रुमाली आपने बनाई जी। अब इसको आप ऐसे रखें। Now smear this large roti with some butter, dredge it with some
flour to keep the layers separate. And then fold it like this into a Chinese fan. Now cut this folded roti starting from bigger to smaller pieces towards the end. Place the biggest piece at the bottom and layer it up in a crisscross fashion. Now pierce the center with your finger to bring the layers together. Then allow it to rest for 5 minutes to make it elastic. Press the rested dough over ajwain seeds. Now roll it out with a rolling pin. Smear it with butter and press it gently on a hot tawa to cook up all the layers. मैजिक टिफिन में अपने घर से एक होममेड नॉर्मल बोरिंग सी डिश लेके आती हूँ और शेफ इसको बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल फैबुलस डिश। तो देखिए इसमें क्या है। बिल्कुल, I cannot stop myself. अरे वाह, ये तो जीरा आलू है। वाह, अब इसमें हम आपको एक होटल जो एक टेक्निक है शेफ की, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जी। और इसके साथ में कबाब बनाएंगे हम। धुआं वाली मैं टेक्निक बताऊंगा। ये मेरे पास पैन है धुंगार, यानी कि उसमें जो स्मोकी फ्लेवर आता है। स्मोकी फ्लेवर आता है। तो इस आलू को आप स्मोकी फ्लेवर देने वाले हैं? जी जी, इस आलू को हम स्मोकी फ्लेवर देने वाले हैं। Just add in some cooked green peas. Mix them and mash them together. And make some space to place the coal. Now light up a piece of coal until it's red hot. Place this hot coal in the center of the mashed potato. Add a spoon of cumin. Now add a spoon of ghee. Once the smoke comes out, close the pan with a fitted heavy lid. इसमें कोई और मसाला भी डाल सकते हैं? आप डाल सकते हैं, जीरे को लौंग डाल दीजिए, इलायची डाल दीजिए। अच्छा। Lift the lid after 10 minutes once the smoky flavors enters the potatoes. इसमें आप हल्का सा धनिया मिला। इसका बिल्कुल फ्लेवर एक्चुअली अलग हो गया है। जी बिल्कुल अलग हो गया। ये बोरिंग से रोमांटिक आलू। Mix in the coriander leaves and green chili and add some toasted chana dal powder for binding. Now flatten the patty and curve the edges for the filling. अंकड़ है ये। अंकड़ है, योगर्ट, जिसे हम दही कहते हैं। ये योगर्ट ऐसे डाल दीजिए अच्छे से और इसको अच्छे से बाइंड करिएगा जिससे कि ये बाहर ना निकले योगर्ट। अगर योगर्ट बाहर निकलेगा तो वो गर्म होगा हीट के कांटेक्ट से, तो वो फैल जाएगा, फिर अच्छे सीखेगा नहीं। Now shape the kebab, heat oil in a pan and shallow fry. जब हम बिरयानी बनाते हैं तो बिरयानी का जो चावल होता है उसको हम खिला खिला कैसे रख सकते हैं? कैसे खिले चावल की बिरयानी बनती है? चावल को आपने सोक कर लिया एटलीस्ट 45 मिनट के लिए, बिल्कुल बॉयल होने लगे, उसमें आप चावल डाल दें। चावल डालने के बाद आप उसमें थोड़ा सा सॉल्ट, हल्का सा घी डाल दें, मेल्टेड घी हो आप बस वो डाल दें, जिससे कि चावल में जो है ना ग्लेज आ जाते हैं। 98% पक जाना चाहिए, जिससे कि चावल जो है खिला, तो वो चावल खिले खिले लगेंगे आपको। जब हम कबाब्स घर पे बनाते हैं तो उसका मैरिनेशन और फ्लेवर वैसा नहीं आता जितना अच्छा रेस्टोरेंट में होता है। तो आपकी जो मैरिनेशन टेक्निक है उसमें कुछ अलग होता है कबाब मैरिनेट के लिए? उसके लिए तो पहला आपको फर्स्ट मैरिनेशन है, जिसमें कि आपका अदरक लहसुन पेस्ट जाता है, नमक जाता है, थोड़ा लेमन जूस जाते हैं नॉनवेज कबाब में। और दूसरा मैरिनेशन जो है वो हंग योगर्ट का है, जिसमें कि हंग योगर्ट में पानी बिल्कुल निकल जाता है, उसी को हम हंग योगर्ट कहते हैं। वो कबाब जो फर्स्ट मैरिनेशन का है उसमें मिक्स करते हैं, फिर उसको पकाते हैं।
If you like this week's restaurant tricks and tips, do watch us on Tuesday at 12 noon next week and do subscribe to our channel. Until then, bye-bye.